गुरु ग्रेस ग्रेटिट्यूड द एसेंस ऑफ गुरु गीता। जो भी लोग आज ये सेशन में आ गए हैं या आने वाले समय में देखेंगे ये सेशन को, एक बात में दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये सेशन आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक फीलिंग है, जो एक भक्ति भाव है, उसे ट्रिगर करने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय दिस। अगर आप कहीं पे भी कुछ और काम कर रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। ये सेशन में पूरी तरह सिंसियरिटी के साथ बैठिए और अगले कुछ क्षण, जो आने वाला 1 घंटा, आप एक अलग दुनिया में जाने वाले हैं। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। एंड आज हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही सीनियर टीचर नीरज सर हैं। नीरज सर, वेलकम, वेलकम टू सत्वा टॉक्स। जैसे आपको पता ही है सर कि ये सेशन का एक पर्पस है कि जो भी ये सेशन कहीं पे भी देख ले, गलती से भी ये सेशन पे क्लिक हो जाए उसका, ये सेशन में उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो देखते रहते हैं आगे तो उनकी लाइफ सेलिब्रेशन बन जाती है और वो दूसरों के भी जीवन में खुशियां लेके आते हैं। एक स्ट्रेस फ्री और वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करते हैं। यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बनाया हुआ है, पूरी तरह बना लिया है और इसी को लेके आगे बढ़ रहा है। एंड नीरज सर, ये सेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, आपको भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बट जो लोग नए हैं उनको मैं जस्ट बताना चाहूंगा। सो talking about him, he is a charismatic, passionate, and a natural inner transformation technology professional. He is the head of MSME Art of Living corporate programs, former director of IAHV India and Nepal operations, and he is a committed volunteer of Art of Living. Former IBMR SAP consultant, lead assessor. He is engineer in electronics and telecommunication, and he is inspired by Gurudev, and he has devoted his life in uplifting humanity since 2000. Yes. So Neeraj sir, हम लोग सब बहुत उत्सुक हैं to listen about Guru Gita, the essence of Guru Gita and Guru Grace gratitude. So बिना किसी देरी के नीरज सर, the whole session is all yours. Yes sir, please unmute. नीरज सर, if you are there. yes, थोड़ा सा इंतजार कीजिए एक बेहतरीन सेशन के लिए। नीरज सर बस अभी आ ही गए। एंड आप लोग कितने एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, थोड़ा सा यूट्यूब में भी लिख के बताइए। एंड दिस सेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड मेनी लाइव्स, आई कैन से। बहुत सारे लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है ये सेशन ने। एंड रियली आप जब ये सेशन देखेंगे, विटनेस करेंगे, तो आपके जितने भी इमोशंस है जो आपको एक भक्ति भाव में लेके जाते हैं, एक अलग डिमेंशन में लेके जाते हैं, वो सारे इमोशंस को आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर की और है बात, ये सेशन कहीं आपसे छूट ना जाए तो वहीं पे रुक जाइए, ठहर जाइए, थम जाइए, सांसों को अपने लय में ले आइए और देखते रहिए। कभी भी नीरज सर आने वाले हैं, ये मैं वेट कर रहा हूँ एक्साइटमेंट से। जो भी शब्द निकल रहे हैं and but he is going to come very soon and we are live on YouTube। and बहुत सारे लोग Zoom में भी कनेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे YouTube में लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे Zoom में आना है, Zoom में कनेक्ट होना है, Zoom में डायरेक्टली वीडियो कॉल में टीचर से बात करना है, अपनी मन की व्यथा बतानी है, अपने जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9819746524। कॉल करने से अच्छा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सत्वा टॉक्स के जूम वाले सेशन में ऐड करूंगा, जहां पे आपको सारे सेशन के जूम लिंक्स भी मिलेंगे। एंड इस जूम लिंक के थ्रू आप सत्वा टॉक्स में आ सकते हो, सेशन देख सकते हो, एंड यहाँ पे टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसका पर्पस ही हमने यही रखा है कि आपके जो भी दिन भर में इश्यूज चल रहे हैं, जो भी तनाव में आप गुजर रहे हो, या जो भी थोड़ी बहुत
आपको इस मार्ग में आगे बढ़ने में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रुकावट आ रहा है, वो यहाँ पे आप आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के साथ साझा कर सको, उनसे एक गाइडेंस लेके आप आगे बढ़ पाओ। एंड इसके लिए मैं बहुत एंकरेज करता हूँ, क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस पूछो। एंड आप लोग के सारे क्वेश्चंस मैं लेना चाहता हूँ और वो टीचर से पूछ के, ताकि आपको उनका जवाब मिल पाए। एंड दूसरी चीज ये है कि सत्वा टॉक्स का जब भी आप सेशन देखो तो आप एक रिलैक्स मोड में बैठ के देखो। एंड ये ऐसे कुछ सेशंस होते हैं जो आपको ऐसी खुशी देंगे जो आपको बाकी यूट्यूब में छान मारी वीडियोस, गुरुदेव के वीडियोस वो खुशी देते हैं, उसके अलावा गुरुदेव के भक्तों के वीडियोस ही खुशी देते हैं। और उस लेवल पे जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी नीरज सर आ गए हैं एंड हम लोग उनका वेट कर रहे थे। ही हैज जॉइंड। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, इंतजार की घड़ी हुई समाप्त और सेशन की कर रहे हैं अब शुरुआत। नीरज सर, यस, वी आर ऑल ईगरली वेटिंग। नीरज सर, ओवर टू यू। यस सर, प्लीज अनम्यूट। यस, जय गुरुदेव। So everybody is feeling good. Sorry for that initial little bit of a hiccup. जो होना है वो होके रहता है, और जो भी होता है अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है। Am I audible? दिख नहीं रहे हैं। दिख नहीं रहे? नहीं, दिख रहे। यस यस, आप स्पॉट डाल दीजिए, you can put me on the spot, not on spotlight but on the spot. Okay, yeah, that's better. Okay, so I usually like to say na bhuto na bhavishyati. जैसे अभिषेक ने बोला, this session is not for the timid ones. It is also not for the ones who are expecting a magic here. Okay, तो दिल को जरा तकड़ा करके बैठिएगा. Let's close our eyes. आंखें बंद करते हैं. चेक कर लें आप सब कंफर्टेबल हैं. आराम से बैठिएगा. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. ओम गंगणपते नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. और धीरे से आंखें चाहे तो खोल सकते हैं. सो गुरु ग्रेस ग्रैटिट्यूड सत्र में, सेशन में आपका सबका स्वागत है. G3, तो 3G तो हमने बहुत सुना है, बट ये G3 हमारे पास कई हजारों सालों से ये चलता आ रहा है. सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस. हर कोई जहां पे भी है वहां से आगे बढ़ता ही जाता है. ये लॉ ऑफ नेचर है. बट अगर तेजी से प्रगति करनी है तो गुरु की आवश्यकता की पड़ती है. तो G3 में पहला G जो गुरु है वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, एक ट्रांसफॉर्मेशनल कैपेबिलिटी एंड सो मेनी थिंग्स. हम सब अपने अपने जीवन में एक गुरु का रोल अदा करते ही है. फ्रॉम टाइम टू टाइम वी प्ले ऑल दीज रोल्स. So Guru is nothing but a window that connects our inner limited view to the vast sky and infinite potential within. तो जो बाहर का
सीमित दृष्टिकोण है, उसको भीतर का जो अनंत प्रखांड पोटेंशियल बोले तो जो एक अथाह सागर है, उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं हमको, वही गुरु है। और हर फॉर्म में आते हैं, माता पिता भाई बंधु सखा बहन, टीचर गाइड कोच। वो किसी को वो रास्ते में जाते हुए वो रिक्शे वाले को हम रास्ता पूछ लेते हैं तो उसने उस समय रास्ता सही बता दिया, आप अपने गंतव्य पे पहुंच गए, तो मान लीजिए उसने गुरु का काम कर दिया। So anyone you ask a question and who answers it appropriately, leaving room for no more question, is a guru. Leads us to deep silence within. Was there, is there, and remains forever available to us. And is the source of all sources. जैसे वेद व्यास जी पहले गुरु, आदि गुरु, ऐसे शिव को आदि गुरु माना गया है। तो the embodiment of fun and lightness, कोई इतना ज्यादा सीरियस नहीं, गंभीरता उतनी नहीं, एक हल्कापन, एक वेरी लाइट माहौल के साथ वो जो भी करते हैं, that is like what we see in our गुरुदेव। और ग्रेस क्या है? एक कृपा, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक कण भी नहीं हिल सकता, विदाउट विच यू नॉट इवन अ टाइनी स्पेक ऑफ डस्ट और लीफ कैन मूव, जिसके कारण हम सब यहाँ आज हैं। कृपा है तभी ये सत्र हो रहा है, कृपा है तभी हम यहाँ सब एक समय में बैठे हैं। उसके बिना हम यहाँ हो भी नहीं सकते, कृपा के बिना। So whatever we get or comes to us happens because of grace. कृपा के कारण ही जो कुछ हो रहा है होता है। कृपा क्या है? एक the love of bigger power that manages massiverse, universe, multiverse, massiverse, multiple multiverses। इतना अथाह सागर है, वो पूरा जो एक शक्ति है जो वो चला रही है, वो कृपा ही है, उसी के कारण चल रहा है। वो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, तीसरा जी क्या है? वो कब आता है? When we realize we have been provided for and got more than what we deserve। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हमको मिला बिना मांगे और समय से पहले। जब ये होता है तब कृतज्ञता अपने आप से ही उठती है। And being in that state we begin to receive more what we got so far, है ना? तो उस अवस्था में रहने से और मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कृतज्ञता इज अ लैडर टुवर्ड्स इनफाइनाइट ग्रोथ। आर यू ऑल हियर? मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा। हाँ, सो ये इसका थोड़ा कहानी आपको बता दूं, ये कैसे हुआ, ये सब सत्र कैसे बना और ये सब कैसे हमने किया। 3 साल पहले कहीं एक सेशन में, सत्संग में गुरुजी से किसी ने पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि है ना, आप लोग क्यों नहीं करते, मैंने तो सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है। सो मेरे को ऐसा लगा कि तो एक डिवोटी को ही ये सेशन लेना पड़ेगा कि गुरु की महिमा का बखान तो एक भक्त को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम ये विचार मन में आया तो फिर उसके बाद एकाएक बहुत कुछ होना शुरू हुआ। तो ये गुरु गीता मैंने सबसे पहले आज से करीबन 14 साल पहले दिल्ली में जीपी की सेवा करते समय, हमारे जीपी डेस्क में आई वाज देयर, दैट वाज द फर्स्ट सेवा। तो अपने आप ही कहीं से वो गुरु गीता मेरे पास आ गई, तो मैंने सुनना शुरू किया। तो जैसे ही मैं सुनता लगा था, आधा पौना घंटा ऐसा गहराई में उतरता कि पता नहीं कहाँ गए, पर मालूम नहीं था कि ये क्या है, उसका अर्थ नहीं जानते, नथिंग, यू नो, इट वाज जस्ट अ चैंट व्हिच आई वाज लिसनिंग इनटू ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर 10 years। आई एंडेड अप लिसनिंग दिस। फिर बीच में कहीं गायब हो गया, और फिर जब ये दोबारा सत्संग में बात हुई तो ये एकाएक
मेरे को वापस दिमाग में आया। तो उसके बाद इंटरनेट से ये पूरा मॉड्यूल अपने आप से डाउनलोड हो गया। तो श्रवण मनन निधि ध्यासा, listening, reflecting and applying, that made a quantum difference, that makes a quantum difference in our life, है ना। So जो भी है वो 3 स्तर पे है, श्रवण, मनन और निधि ध्यास। ज्ञान जो है वो इट इज फॉर सेल्फ एप्लीकेशन, नॉलेज इज फॉर सेल्फ एप्लीकेशन, पर मन का क्या है, इट टेंड्स टू शेयर इवन विदाउट लेटिंग इट सिंक इन। ये स्वतः ही होता है कि कुछ अच्छी चीज मिलती है तो हमारा बांटने का मन कर जाता है, बट एक ख्याल थोड़ा रखना चाहिए, लिटिल नॉलेज कैन मिसलीड। सो ये सेशन किसके लिए है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फिर एकाएक एक दिन कोई तो डिवोटी थे, वो चल दिए, तो सडनली मेरे को बहुत झटका लगा। टू यू नो वन शुड फिनिश द, इट वाज लाइक अ रिमाइंडर टू फिनिश द बिगेस्ट टास्क, काइंड ऑफ लास्ट असाइनमेंट बिफोर वी गेट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। गुरुजी बोलते हैं ना, सभी एक एस्केलेटर पे चल रहे, कन्वेयर बेल्ट पे चल रहे, कब उठा के आउट हो जाएंगे मालूम नहीं है। तो दैट वाज द पुश कि चलो कुछ तो करें, कुछ तो बनाएं। तो गुरुजी को फिर मैसेज किया, उनका ब्लेसिंग मिला, स्ट्रक्चर पूरा देवी पूजा में बैठे पूरा ऐसे डाउनलोड हो गया। और मैं डेली वॉक करता था आश्रम में, तो ऐसे कुछ ना कुछ जैसे फूल ऊपर से गिर रहे हैं, नगेट्स, नॉलेज का नगेट जो अपने आप से गिरना शुरू हुए, एज ए फॉलिंग फ्रॉम द हेवन इन माइंडस्केप पोस्ट माय डेली मेडिटेशन आल्सो। तो सबको इकट्ठा करके, अभी इनिशियली तो ऐसे ही करते थे, अभी एक छोटा सा पीपीटी है जो मैं यूज कर लेता हूँ। और इस भाव से, पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से, विनम्रता से, एक निमित्त बन के इसको हम बांटते हैं। तो प्रार्थना यही है कि जो भी हमारे माध्यम से होना है, let what needs to flow through unto all those who may need it, let it flow through without any obstacles. So it's a seva that is cherished and prayed for as a devotee, from the highest, of the highest, for the highest. So trikal banditam yat tat satyam, the highest truth. When we are talking about the highest truth, then this remains same across the ages. जो सत्य क्या है, जो across ages वही रहता है, बदलता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारा स्टिकी माइंड है, मन जो है क्या है, वो बाहर चलता है, उसको कैसे करके वापस पकड़ के हम बैक टू द सोर्स लेके आए। तो मेरे को लगा ये मॉड्यूल से ये काम हो सकता है। और एक सुनामी ऑफ डिवोशन इससे उत्पन्न हो। उस समय जब बात हुई थी तब कोविड नहीं था, तो अगले साल प्लान था इसे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल और सब मनाने का। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे को मन है कि आप वेव्स ऑफ डिवोशन और वेव्स ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं, मेरा मन हो रहा है सुनामी ऑफ डिवोशन पैदा की जाए, अगले साल तक हम इसको करना चाहते हैं। सो गुरुदेव जस्ट tapped me on the shoulder and just gave me a grin like his usual way. अच्छा तू कर क्या रहा है? So I just explained a little bit to him and got his blessings. So what we see outside is reflection of inside. So knowledge is energy exchange. It's not just words. It's energy exchange, and spontaneity is what is driven from the big mind. Anything कुछ भी spontaneous होता है, स्वतः होता है, तो मान लीजिए कि वो कहीं और से आ रहा है. We are just a hollow and empty channel to let it flow through us. तो जैसा मन वैसे दर्शन. तो नॉलेज वर्सेस सोर्स एक चैलेंज रहता है. जैसी नॉलेज मिल जाती है तो हमको लगता है हमको कुछ मिल गया, तो बांटने का ऐसा प्रयास शुरू हो जाता है. एंड वी समवेयर टेंड टू फॉरगेट द सोर्स इटसेल्फ. सो उपनिषद क्या है? सिटिंग क्लोज टू द मास्टर फिजिकली, मेंटली, एन इंटीमेट कॉर्डियल एनवायरनमेंट विद डिवोशन एंड सरेंडर. ये सब गुरुदेव की बातें सब आपने सुनी ही है. और शब्दों के पीछे
ऊर्जा होती है। ऋषि नाम वाचा नाम, कहते शब्द पीछे आता है, उसका अर्थ पहले आ जाता है। तो इसीलिए प्रार्थना करते हैं क्या, तीनों जगह में, वो एनवायरनमेंट में, बॉडी में, इमोशन में, सोल में, सभी जगह शांति हो। इसीलिए वो शांति मंत्र से शुरुआत करते हैं। क्या दिस ह्यूमन लाइफ इज इनवैल्यूएबल, वॉकिंग ऑन द पाथ विद द लिविंग मास्टर इज इनवैल्यूएबल। जीवन तो मिल गया, पर कितने हैं जो इस रास्ते पे आते हैं, और कितने हैं उस रास्ते में प्रैक्टिस कर पाते हैं, और कितने हैं जो एक जीवंत अनंत गुरु के सानिध्य में, उनके साथ में आगे बढ़ते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रसाद है, बड़ी कृपा है, इट्स अ ब्लेसिंग। तो ये जो पहला सेशन लॉन्च हुआ उसका बहुत एक कहानी है, पर इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि समय उतना नहीं है। पर इट गॉट लॉन्च्ड ऑन गुरुवायूर एकादशी, गीता उपदेश तिथि वाले दिन ये हुआ। पिताजी का बर्थडे था, गुरुदेव के पिताजी, उनसे मेरा बहुत स्नेह था। जब भी मिलते थे बड़े अलग तरह से इंटरेक्शन होता था। तो उनके, एंड द डेट गॉट डिसाइडेड ऑन इट्स ओन। सो आज का दिन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो बाद में जाके आप अपने गूगल कर लीजिएगा। पर सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि आप इस सत्र में बैठे हैं, यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। ना भूतो ना भविष्यति। तो आज जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये नोट कर लीजिए। ना आज से पहले कभी हुआ, ना आज के बाद कभी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पल, दिस मोमेंट इज वेरी डीप। ना पहले था, ना पहले, ना कभी आने वाला है। तो इसमें पूरी तरह से डूब के हम आगे बढ़ेंगे। Are you all here? So where are you looking? अंतर्मुखी या गुरुमुखी? ये बात हमको याद रखनी चाहिए। What we look up to, we become that. गुरुजी बोलते हैं ना, जिसके बारे में सोचते हो वैसे ही धारणा, वैसा वैल्यूज, वैसा उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप में स्वतः आना शुरू होता है। तो गुरु क्या है? रिमूवर ऑफ डार्कनेस, गुरु, ट्रांसफॉर्मर, ऑर्गेनाइजर ऑफ नॉलेज। तो हमारे शरीर में कितने सेल्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके जोड़ के रखने के काम गुरु। कौन हमको यहाँ लेके आया? आप सब तैयार हुए, इस सेशन में आए, आपको लगता है आपने कुछ एफर्ट डाला तो यहाँ पहुंचे, ऐसा ही लगता है ना? ऐसा ही लगता है ना? I tell you, each one of us has been handpicked and brought and dropped here in this moment. तो क्या है? गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं बड़ा उसको बोलते हैं। उसके कारण हम यहाँ हैं। जो भी सुन रहे हैं जूम सेशन में या लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं, उसी गुरुत्व आकर्षण के कारण हम इधर बैठे हैं। ये पल जो है, इट्स न्यू। अब जो हो रहा है, जैसे मैंने बोला, ना पहले हुआ, नेवर हैपेंड बिफोर, ये पहली बार हो रहा है और ये कभी होने वाला नहीं है। सो इसका इस्तेमाल, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस। There is a story, but I won't go into it. But let us all affix Vidyarthi behind our name, family name. So Neeraj, Kohli, Vidyarthi, जो भी आपका नाम है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी बन के be in the student mode, all ears, and dive deep and make the most of it. Vidya dadati vinyam, Vidya dadati purnatvam. So ये कब शुरू हुआ सारा? बहुत साल पहले, वेरी एंशिएंट येट एवर फ्रेश ज्ञान गंगा है। और nobody can repeat this program, I have told you already. हर बार आप इस प्रोग्राम में आएंगे, आपको लगेगा आप पहली बार आ रहे हैं। It comes from Skanda Puran, delivered thousands of years ago, yet it is so fresh. पुराना क्या है? Which is new in the town. Stories based on events that occurred to relay the lessons learned. Then 18 महापुराणास हैं उसमें। इतिहास क्या है? It does happen. तो हिस्ट्री है जो हमारी, धर्मशास्त्र, epic, 4 lakh plus shlokas are there in that. So it's अथाह सागर है ज्ञान का। इसीलिए कहते हैं तस्मै नमः परम कारण कारणाय। और जैसे एक लोटस का लीफ है, कमल का जो पत्ता होता है, सुबह उसके ऊपर एक
ड्रॉप पानी का गिरता है ओस का, और वो उसको गीला नहीं करता, उसके ऊपर पूरा मोती की तरह रहता है, और जैसे हल्का सा उसको उठाए तो वो धीरे से रोल कर जाता है। सो पद्म पत्रम इवम भासा। सो लेट वॉट एवर इज कमिंग राइट नाउ, जो भी सुन रहे हैं, जो भी ऊर्जा आपको मिल रही है, उसको बस ऐसे आने दीजिए, उसको लेट इट जस्ट फ्लो। तो इसका शुरुआत क्या है? सूत उवाच। जैसे संजय उवाच से भगवत गीता शुरू हुई, गुरु गीता शुरू होती है सूत उवाच। सूत जी कौन थे? लॉन्ग लॉन्ग अगो, फार फार अवे, एंड ही वाज एन एंशिएंट स्टोरी टेलर एंड ही रिकाउंट्स। सूत जी क्या बोलते? डिसाइपल ऑफ वेद व्यास जी, वेरी पावरफुल ओरेटर, टेल्स सीयर सिटिंग इन नामेशरण्य। नामेशरण्य के बारे में आपने सुना है, वो वहां बैठ के काफी सारे ऋषि मुनि बैठे हैं और वो एक स्टोरी बता रहे हैं। वो सूत जी क्या है? बॉर्न ऑफ क्षत्रिय फादर एंड ब्राह्मण मदर। उन्होंने सुखदेव जी से सुनाई। सुखदेव जी वेद व्यास जी के बेटे हैं और डिसाइपल है। वो वेद व्यास जी से डायरेक्टली सुक जी ने सीखा और सुक जी से सूत जी ने ये सीखा। तो क्या है ये? कॉन्वर्सेशन बिटवीन शिवा। शिवा क्या है? सोर्स ऑफ ट्रुथ, बेनोवलेंस, ब्यूटी एंड ब्लिस। और पार्वती क्या है? क्यूरियोसिटी टू नो द हाईएस्ट ट्रुथ। जब भीतर में एक इच्छा उत्पन्न होती है सबसे उच्चतम क्या है उसके बारे में जानने की, तो शिव तत्व मिलता है। तो सीन क्या है? माउंट कैलाश का। देवता जो है वो शिवा को बो कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, और शिवा जो कहीं और देख के वो इन्फिनिटी की तरफ नमन कर रहे हैं। तो ये देख के पार्वती बहुत अचंभित होती है और फिर वो पूछती हैं। तो फिर जो उन्होंने कहा वो गुरु गीता में आएगा, आगे आएगा। तो इसको सुनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है ना? अपने आप को आप मान लीजिए यहाँ आ गए तो मतलब यू आर क्वालिफाइड। इंटरेस्ट टू नो एंड इट कम्स गिव्स राइज टू नॉलेज एफर्टलेसली। अपने आप से आता है। इट इन्वोक्स, सो डिवोशन क्या है? इट इन्वोक्स विजडम फ्रॉम विद इन। तो भक्ति का जो रास्ता है सबसे आसान बोला गया है, क्योंकि जब भक्त हो जाओ, वो एंड में भक्ति नहीं, भक्त होते ही भक्ति मिल गई, प्रसाद पहले ही मिल गया, चलते ही मिल जाता है। सो प्रेम और डिवोशन, भक्ति जो है भीतर का जो एक खालीपन है, एक भरापन है, उससे जोड़ता है। पीक ऑफ एवरी इमोशन टेक्स अस टू द सेम स्पेस। मुक्ति क्या है? उस स्पेस में, उस आकाश तत्व में मिलना और ये रियलाइज करना कि हम आकाश तत्व ही है। और ये सब शरीर के भीतर रहते हुए ही अनुभव कर सकते हैं। और शरीर क्या है? 50 ट्रिलियन सेल्स, इसीलिए पूरा बोला है। स्पिरिट विद इन इज पुरुषा, नॉट बॉडी बट बीइंग। 50 ट्रिलियन सेल्स जो हमारे भीतर है, तो वो वन हु लिव्स विद इन द टाउनशिप, वो क्या है? पुरुषा। So we are not a person but amalgamation of cooperation of 50,000 trillion individual beings. Each cell has its own life. तो क्या गुरु शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को पूर्णता देने वाली गुरु शक्ति है। इसीलिए गुरु का ओम श्री गुरुभ्यो नमः से ही शुरू करते हैं। तो इच्छा भी है, ज्ञान भी है और क्रिया भी कर रहे हैं, पर फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु शक्ति जागृत नहीं हुई है। तो जैसे एक नर्तक होने से ही नृत्य दिखता है, सो द डांस एंड डांसर। लैंप है तभी लाइट है, तभी लैंप है तभी लाइट दिखेगा, है ना? वैसे ही क्रिएटर एंड क्रिएशन, क्रिएशन है तो कहीं ना कहीं क्रिएटर भी बैठा है, और अनुभव हो रहा है तो अनुभव करता भी कहीं पीछे छिपा है। प्रकृति है तो पुरुष है। वैसे ही जहां ज्ञान मिल रहा है, अगर कुछ भी बात अभी तक दिल को छुई तो मान लो गुरु तत्व एक्टिव है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। क्या है गुरु? ग्रंथ, स्क्रिप्चर में से मिल सकता है, ग्रोथ देते हैं, गति, प्रगति, प्रोग्रेस होती है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु को बृहस्पति कहा गया है,
क्यों कहा गया है मालूम है आपको? क्योंकि जो भी एस्ट्रल डस्ट पृथ्वी की ओर आ रहा है, वट एवर इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, उस सबको अपने आभा मंडल में वो पकड़ लेता है, वो डिजॉल्व हो जाता है. सो इट इज लाइक ग्लोबल प्रोटेक्शन सिस्टम. तो गुरु प्रोटेक्शन सिस्टम. तो गुरु क्या है? गुरु अगर जीवन में जागृत हो गया तो मान लो जीवन निश्चिंत हो गए. नहीं तो कहते हैं अगर जुपिटर ना होता तो कब की पृथ्वी खत्म हो गई होती. तो हम कितने भाग्यशाली है, ये कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, अनुभव करने की बात है. तो इसीलिए बृहस्पति गुरु कहा है जुपिटर को. और भक्ति सबसे आसान है. नारद भक्ति सूत्र जिन्होंने सुना उसमें है, भा माने फुलफिलमेंट, का माने मीन्स ऑफ नोइंग द नॉलेज, तारना या तरना रिडीमिंग सेविंग फॉर सैल्वेशन, और ई क्या है? शक्ति. तो भीतर शक्ति है जिसके बिना शिव भी शव हो जाता है. एन इंटेंस फीलिंग फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन. एग्जाम्पल ऑफ कैनाल वर्सेस फ्लडेड फील्ड, एंड काम फोकस्ड वर्सेस मेसी माइंड. जब वो एक भीतर से ऐसी एक फीलिंग उठती है, उमड़ती है, भावना उमड़ती है, तो वो भक्ति ही है. और सरेंडर क्या है? साइन ऑफ इंटेलिजेंस है. इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस. बिना सरेंडर के कुछ होता नहीं है. जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वो मेरे छोटे से जीवन को चलाने में सक्षम है. ये बात पे पूरा खरा खरा उतरना और इसको समझना, यही सरेंडर. इसका मतलब ये नहीं हमको कुछ नहीं करना, अपना कुछ किया और फिर उसको दे दिया. आप देखो, तो फर्स्ट वी बिलीव दैट द होल वर्ल्ड लव्स यू और लव्स मी, एंड आई ऑल्सो लव दिस वर्ल्ड, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ ए ट्रू डिवोटी, गुरुदेव कहते हैं. And knowing the unknown needs faith, and that with what is coming our way is coming from that one source only, irrespective of the channel delivering the message. That is Shraddha, that is faith. ये मैं कह रहा हूँ. तो एक स्टोरी है, छोटी सी सुनाते हैं. फेथफुल डिवोटी की. गुरुजी ऊपर बैठे हैं कहीं पहाड़ के ऊपर, और एक डिसाइपल नीचे हिल के बेस पे बैठा है, और जो भी कोई आ रहा है तो उनको पूछ रहे हैं, अच्छा गुरुजी से मिलना है? उनको भगा रहे, नहीं क्या करना है, मेरे से जो पूछना है पूछ लो, मैं बता देता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ पिछले 20 साल से, जो भी तुम्हारे प्रश्न है वो सब मेरे को आते हैं, मैं बता दूंगा. तो नीचे से ही भगा दे रहा. तो एक कोई था, वो बिरला ही, वो इनकी बातें अनसुनी करके ऊपर पहुंच गया. गुरुदेव से ध्यान में बैठे थे और उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए, और उसने बोला कि ये क्या, ये किसको बिठा रखा है नीचे आपने? जो भी आ रहा है उसको नीचे से ही भगा रहा है. तो कहते हैं मुस्कुरा के, हाँ मैंने ही उसको ये कार्य दिया है करने को, ताकि मेरी तक वो ही पहुंचे जिसको वाकई ही जरूरत है. तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, मेरे तक इतना समय नहीं है कि मैं सब ऐसे लोग जो हम पूछते रहते हैं कि अरे गुरुदेव हमारा ऑटो ट्रैफिक में फंस गया, जरा कर दीजिए. इतनी एप्लीकेशन हम डालते हैं गुरुदेव को, आप सब जानते ही है ना. गुरुदेव किस कार्य से आए हैं और क्या क्या बड़ा बड़ा कर रहे हैं ये भी हम जानते हैं. फिर भी हम क्या करते हैं, इच्छा उत्पन्न होती है तो हो गई, कोई बात नहीं. तो क्या कहते हैं, सुनो सबकी पर करो सदगुरुदेव की. बोलते हैं ना. चलिए आंखें बंद कर लीजिए और गुरु जी का मन में स्मरण करते हुए हृदय के पास उनके चरण और चेहरा ऐसे महसूस कीजिए आपके हृदय में है. ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. तो एक स्पंदन महसूस किया आपने? हाँ, वही है गुरु तत्व, और हम उस तत्व में से फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग इन इट. गॉट इट? अप्लाइंग द नॉलेज, following guru's instruction without filtering or personal interpretation or dilution with full faith yields appropriate outcome.
और ज्ञान जो बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म भी है, इट्स वेरी वास्ट. तो डोंट बी इन अ हरी टू गेट इट ऑल. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल, एग्जिस्टेंशियल. बुद्धि के स्तर पे, फिर अनुभव के स्तर पे, फिर उसको आचरण में आ गया. जब आचरण में आ गया, जो आप कर रहे हैं वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है. और 2 तरह का है, अप्लाइड और प्योर. अप्लाइड माने जो अभी इमीडिएटली हो गया, और प्योर जो बाद में, जब भी ये सीड है हमारे में, जब भी जरूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा. गुरु जी को हमसे, गुरुदेव को हमसे क्या चाहिए, गुरु को हमसे क्या चाहिए, व्हाट डज अ गुरु नीड फ्रॉम अस? ये प्रश्न मन में उठता है. वो उनको कुछ नहीं चाहिए, पहली बात. इफ गुरु, इफ इंफिनिटी नीड समथिंग, कैन वी कॉल इट इंफिनिटी? हाँ, हो नहीं सकता. तो गुरु को क्या चाहिए? बलशाली. हम बलशाली बन जाए. सर्व, नॉट जस्ट बी सर्व्ड. गिव, नॉट जस्ट टेक. I'll repeat. Serve, not just be served. Give, not just take. बलशाली बनना. तो गुरु सेवा का मतलब क्या है? प्रेम बांटना, ज्ञान बांटना, शांति सभी जगह फैले. Devotee needs to be बलशाली, valor, brave, courageous, physically, mentally, emotionally, and spiritually strong. If one is stuck in own weakness, so will we do seva or take seva from the master and others? सोचो, समझ रहे हैं? तो दिलों को जोड़ना, बाइंडिंग द हार्ट्स, दीन दुखियों के आंसू पहुंचना, एक नूर से सब बना है. और इसलिए लेट्स नॉट वेट एंड वेस्ट दिस लाइफ टाइम्स अपॉर्चुनिटी. गुरुदेव बोलते हैं, हड्डी जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घास. तो किसका इंतजार है? गुरु से क्या मांगना चाहिए? बी इन ग्रैटिट्यूड. विजन टू सी गुड इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन. ये हमेशा कृतज्ञता बनी रहे, और कितने भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें क्या अच्छा है ये मेरे को दिखाते रहना. सो शुक्राना. गुरुदेव कभी हमारे उत्तरों के सवाल देते नहीं है, बट raises intimate questions in us, making us answerless. हमको लाजवाब बनाते हैं. अब एक क्वेश्चन है कि क्या ज्यादा वैल्यूएबल है? ज्ञान, विजडम कि मैं कौन हूं, अवेयरनेस अबाउट आवर इनर पोटेंशियल, इनेट पोटेंशियल, thou art that, हम तत्वमसि, or the one who makes us aware of above and helps one assimilate experience and exist with it. तो क्या है? जिसने ज्ञान दिया उसको भूल ही गए. ज्ञान को पकड़ के कहीं वो स्टिकीनेस हो जाता है. तो ये देखना. तो एक बार हम गुरुदेव के साथ ट्रेवल कर रहे थे, बहुत साल पहले की बात है. दिल्ली से ऋषिकेश उनकी कार में जा रहे थे, तो रास्ते में एक डिवोटी के यहाँ नाश्ते के लिए रुके. तो गुरुदेव ऐसे बैठे हैं, बीच में टेबल है, गुरुदेव इधर है. आई वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड. ड्राइवर जो थे वहाँ के साथ ड्राइव कर रहे थे, वो भी डिवोटी, वो सामने इस तरफ बैठे, और इस तरफ एक महिला जो नाश्ता लेके आई. तो ये महिला गुरुदेव को सब परोस रही हैं, एक एक करके पकड़ा रही हैं, और गुरुदेव कभी इधर दे रहे हैं, कभी इधर दे रहे हैं. फिर अचानक एकदम से उन्होंने ऐसे फेंका. इट वेंट अक्रॉस इन बिटवीन द टू ऑफ अस, एंड आई डोंट नो क्या हुआ. सडनली ही मेरी प्लेट ऐसे स्वतः ही उठी, और ऐसे टक, एक स्प्लिट सेकंड में उसको पकड़ा और वापस आ गए. तो फिर उस समय गुरुदेव ने ज्ञान दिया. क्या जानना है आपको? Do you want to know what he said? तो उन्होंने कहा कि देखो, पकड़ने वाला ऐसा हो तो खिलाने का मजा ही कुछ और है. अब ये इंटरेक्टिव सेशन, मतलब वर्चुअल सेशन है, ताली तो बजा नहीं सकते, पर मन में बजा लीजिएगा इच्छा को मन करने की. वैसे ही एक बार हम मॉन्ट्रियल आश्रम में गुरुदेव से मिलने गए, 2005 की बात है. तो हम मिल के वापस आ रहे थे. So that time he looks at my wife and he says, "Oh, you are carrying." So she was about 7-8 months pregnant that time, so it was showing. So देख के बड़े प्यार से बोले, "You are carrying."
तो अचानक क्या हुआ, मेरा सर गुरुदेव के कंधों पे झुक गया और मैंने उनको थोड़ा हग किया और कान में बोला, यस गुरुदेव, वी आर कैरिंग यू एवरीवेयर, हम आपके ज्ञान को सब जगह लेके जा रहे हैं. So what is worth digging deeper into? Knowledge, its application at the first opportunity, source of knowledge, knower who brings us the knowledge is most intriguing, worth finding out about. What do you say? Huh? ये कहाँ से आ रहा है? So once we understand what's worth exploring, focusing on it happens effortlessly. Thus need and importance of highest aspect, and Guru Gita is sung to glorify that the one that glorifies everything else. जो सबको चमकाता है, उसको चमकाने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए गुरु गीता कही. एंड ओनली अ लिट लैम्प कैन लाइट अनदर्स. खुद ही बुझे है तो किसी को क्या जला पाएंगे. तो जितने स्टार्स, मून, सन्स, everything draws light and shine due to the effulgence of self-illuminous Guru Tattva. तो गुरु को देना क्या चाहिए? Flowers, fruit, regular items, etc., etc. So whatever one perceives as needed by Guru, right? I tell you, the biggest offering is offering oneself. सर्वस्व, अपना सर्वस्व गुरु को निछावर करना, ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है. इसकी गुरु स्टोरी है, बाद में कभी सुनाएंगे. So let's come to now the most important point. तो अभी हम गुरु महिमा यज्ञ इसको बोला है. गुरु की महिमा तो कोई जानता नहीं है, और जो हम अभी सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, the essence of Guru Gita, it's an attempt to give a single window view of the infinite. और अगर हम इसमें successful हो गए, we would have still failed miserably in one aspect. Are you getting it or getting confused? तो भीतर एक हृदय के पास एक ज्योत जला लीजिए. Bowing down to all gurus of the past, present and future. Let's now close our eyes. बंद कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए. I will be reading this at a particular pace and speed. Don't bother, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, let it just sink in. पूरे समर्पण और श्रद्धा भाव के साथ the Guru-disciple relationship. Guru Gita offers guidance on how to meditate on the mystery of the Guru's role and nature, how to cultivate loving devotion to the teacher and teachings, and how the personal growth gained through this relationship leads to self-realization and service to all beings. The transformative power of these teachings, that which gives its extraordinary vibrancy, is not that the Guru has attained an enlightened state unreachable by us. The teachings of the Guru Gita have the power to inspire and transform precisely because Guru is a human being like us, and because we all have the same spiritual potential within waiting to unfold. It is the Guru within us that recognizes the Guru without. In fact, Guru within and Guru without are one. From time immemorial, the path to enlightenment has essentially been the same. Those that have experienced the truth, the enlightened, are lit candles that show the way, seekers of light, not yet realizing that what they seek is within. Find a lit candle that stirs buried memories of their own inner light. The powerful devotional aspect of Guru Gita is the unlit candle snuggling up close to the lit one to learn its secrets to success, to emulate it, form a relationship to it, and serve and revere it. Most importantly, the unlit candle strives to catch a spark of the light from its fully lit master to become enlightened by a flame that has been passed from master to disciple from time immemorial. The Guru-disciple relationship is really between a seeker and the divine light. Guru Gita background. Guru Gita is a part of larger text. The Skanda Puran, compiled between 6th and 15th century, takes form of a dialogue between Lord Shiva, Lord of the universe, and his royal consort, Goddess Parvati. It begins with Parvati observing Shiva expounding the supreme truth to the sages. She is astonished
when she sees that while the sages were bowing to her husband, he in turn was reverently bowing to someone else. Oh, my Lord, you are the teacher of the entire world, the one supreme being. You are fit above all to receive prostrations. To whom do you bow? I am amazed at this. Please enlighten me. The great Lord's response was simple, direct, and startling. It is to the Guru I bow. Hearing this, Parvati asked Shiva to explain the nature of the Guru and for the sake of humanity to reveal the path by which seekers can unite with the Absolute. In response to her request, Lord Shiva sang the Guru Geeta. Guru Geeta lifts us into the world of celestial beings, of sacred mountains, rivers, and streams, of holy trees, herbs, and of mantras and mandalas that have the power to bring knowledge and peace to dedicated seekers. It is a glorious world, but it can be a bit dizzying without knowing the meaning of its symbols. I have done my best to clarify many symbols used in this text. In part, I have done this by minimizing the use of Sanskrit. Another goal of this translation was to integrate the inner meaning of the symbolic and cultural references into the translation so that the listener wouldn't need to resort to an encyclopedia to understand the intent of a verse. I have also rendered the text general neutral. Although there are and have been many great female gurus, the image most have of a guru is male. And I didn't want to reinforce that image. Guru is neither male nor female. Guru is the light. Disciples of any guru can use Guru Geeta to reflect on the incredible vibrancy of the relationship they have entered. It awakens and strengthens love and devotion. It helps overcome fear, brings peace and joy, and breaks the bonds of ignorance. Wisdom embedded in this text will bloom with repeated listening. Allow the images to enter your heart and awaken you from within. I have come to this understanding of the Guru. God comes to us in many forms, not only the images we see in temples, churches, and other places of worship, but as people and events of our lives. God appears to us as the remover of obstacles, as family, friends, food, challenge, whatever we need at any time for our growth. Guru is God coming to us in the form of mercy. It is a form that God takes when we have seen the limitations of expecting the world to deliver what it cannot. Unshakable peace. It is at that time the ancient saying comes to life. When the student is ready, teacher appears. Mother Nature always fulfills a sincere need. Somewhere you were asking for this session. That's why it's happening for you. May this Geeta be a blessing to all who hear it. Oh. Hear now the hymn, the Guru Geeta, sung by Lord Shiva. It sings the song of Supreme Self manifesting as the Guru. The mantras that are the source of all speech, power, and stable strength are its foundation. Repeat this hymn each day to obtain Guru's grace. Meditate on the Guru as seated in the crown of the head, surrounded by the sacred mantras, Hum, Sa, which abide in all beings and that are the cause of the universe. The Guru, the source of the universe, freely chooses to appear in living form on earth. Meditate on the feet of the Guru, who is Shiva, who reveals the supreme truth as a lamp to remove darkness, who is eternal, all-pervasive, and who is the visible form of imperishable. I sing this song to fulfill 4 great values of life: prosperity, enjoyment, righteousness, and liberation. The Guru Geeta begins on the summit of Mount Kailash, the crest jewel of all mountains, the excess of devotion, the abode of oneness. Goddess Parvati, Shiva's royal wife, reverently bowed to him and said, salutations to you, O Lord, God of gods, who is higher than the highest, O Guru of the universe, eternally auspicious one, great Lord, initiate me in the knowledge of the Guru. Please teach me the surest way for the embodied soul to become one with the Absolute. At your feet I pray, show your compassionate grace to me. Lord Shiva replied, Oh, dear goddess, you are my very self. Because I love you, I will speak. Your question, which has never been asked before, will be helpful to all creation. In the entire universe, there is no knowledge more subtle and elusive. Listen as I reveal this truth to you. Apart from the Guru, there is no other Brahman, no beautiful one. What I say is true. It is the truth. The wisdom of the highest scriptures, the doctrines of all sacred texts, the acts of the gods and the wise sagas of life, the science of mantras, yantras, and so on, powerful incantations, the wisdom passed on to each generation, the sacred teachings of those who worship the Absolute as divine father or mother, and other revered works. All these doctrines and creeds only bring the downfall of those whose minds are restless and deluded. Those who offer sacrificial rites, make vows, repeat mantras, or engage in penance, pilgrimages, or charity still go adrift without knowing the nature of Guru.
Guru is not different from pure unbounded consciousness, the self. This is the truth. Without a doubt, this is the truth. Knowing this, the wise ceaselessly strive to realize the true nature of Guru. For the embodied soul, knowledge of the self is veiled by a false perception of the world born of ignorance. The one by whose light self-realization arises is known by the name Guru. All harmful desires and past deeds will be completely washed away by service at the feet of the Guru. Thus, the embodied soul becomes one with the Supreme. Have no doubt, the words I speak to you are true and carry the grace that liberates one from ignorance and suffering. To obtain all the benefits of bathing in places of pilgrimage, sprinkle pure water on your head and your mind focus on the Guru's lotus feet. Water from the ceremonial bathing of Guru's feet dries the mire of sins, brings forth the radiance of intuitive insight, and perfectly delivers one across the ocean of worldly illusion. It washes away ignorance and puts an end to rebirth and karma. Therefore, one should drink the water of Guru's feet to obtain non-attachment and self-realization. Drink the holy water of Guru's feet. Take the food that Guru leaves to eat. Always meditate on the Guru's form. Constantly repeat the mantra Guru has given. Any place where Guru dwells is the holy land of Kashi. The water that washes Guru's feet is the Ganges. Guru is the Lord of the universe, perceptible to the eyes. Indeed, Guru is Brahma, the Savior. Water that has been poured over Guru's feet is the pilgrimage site, Gaya. It is the holy banyan tree. It is Akshaya and Prayag, the meeting place of sacred Ganges, Yamuna, and Saraswati rivers. Salutations again and again to the Guru. Always lovingly recollect the Guru's divine form. Constantly repeat the mantra Guru has given. Follow Guru's guidance with your mind absorbed on nothing other than the Guru. The supreme knowledge that resides in the mouth of Guru can be attained by Guru's grace alone. Keep your Guru ever present in your heart, just as a devoted wife keeps her husband there. With your heart absorbed in nothing but the Guru, let go of attachments to your status as student, spouse, parent, and to your social standing, fame, and cravings for accumulating wealth. It is true that those who direct all thoughts to me alone achieve the highest state. The supreme state can also be attained by wholehearted worship of the Guru, who is Shiva manifest in human form. From every corner of the universe, declarations of knowledge burst forth from gods. Their rivals are from departed souls, but supreme knowledge resides on the tongue of the Guru, and through devotion to the Guru, it is obtained. Guru is the symbol for darkness, Guru the remover of darkness. Guru is the supreme knowledge, indeed the swallower of darkness. Guru the symbol of ignorance, born of misperception. Guru is the supreme knowledge that destroys ignorance. Thus, the feet of the Guru are the highest goal, even difficult for the gods to attain. Indeed, even celestial musicians and their followers worship the Guru's feet. For them and for everyone, there is surely no truth higher than the Guru. Therefore, the seeker of the truth should offer seeds, beds, clothes, ornaments, vehicles, anything the Guru needs. But the best offering that pleases the Guru, more than that, offer your life. By continually serving the Guru in thought, word, and deed, prostrate fully in front of the Guru without the least reservation. Dedicate your body, senses, and life force to the Guru. When you consecrate everything you call yours, even your spouse and your very self, in the name of the Guru, it is blessed. O beautiful one, do not hesitate to live for the sake of the Guru and the teachings. Those who live for the pursuit of pleasures should remember that the body is transitory, the residence of germs, foul waste, toxins, and phlegm, and is reduced to ashes in the end. Those who venture onto the tree of this fleeting world of change sink into the ocean of torment at the end of their lives. Salutations to the Guru, who surely saves all his devotees from this fate. Guru is Brahma, Guru is Vishnu, Guru is Shiva. Indeed, Guru is the supreme absolute. To that Guru I offer my reverent salutation. Guru is the cause of the universe, the bridge to cross over the ocean of change and the source of all knowledge. Salutations to the Guru, who is Shiva. Salutations to the Guru, who with the poultice of knowledge opens the eyes of one who is blinded by the darkness of ignorance. Guru, who is the father, mother, family, divine light of devotees, bestows realization of the limitations of worldly existence. Salutations to the Guru. My reverent salutations to the Guru, who is the embodiment of absolute truth, the light by which that truth is perceived and whose bliss reveals joy to all. Salutations to the Guru, whose existence brings truth to all beings, through whose form the divine light, like the light of the sun, shines on everyone, and in whose unconditional love we come to love our family and all beings more and more. Salutations to the Guru, by whom this world is illumined, who perceives all states of consciousness, waking, dreaming, and dreamless sleep, but who cannot be perceived by mind. Salutations to the Guru, who is the truth,
whose knowledge of the universe sees through the illusory divisions that split it into fragments, and who perceives no distinction between the universe and the self. Those who say they don't know the absolute know it. Those who say they know the absolute know it not. Salutations to the Guru, whose mind is ever absorbed in the absolute. Salutations to the Guru, who is the cause of the universe, although appearing as an effect. In truth, Guru is both the cause and the effect. Salutations to the Guru, who reveals that this universe of countless forms is in fact one undifferentiated whole, a play of cause and effect in which cause and effect are one. Prostrations to the Guru, whose lotus feet eradicate the suffering brought by duality and who always protect seekers from all misfortunes and calamities. If Shiva is angry with you, Guru can save you, but if Guru becomes angry with you, even Shiva cannot save you. Therefore, by all means, take refuge in the Guru. I offer my reverent praise and honor to the Guru's radiant feet, where devotees' speech, mind, and intellect dwell, and which are the supreme manifestations of spirit and nature. The syllable Gu is that which is beyond gunas, the subtle forces of creation. Ru is that which is beyond rupa, all forms in creation. The one who bestows the state beyond all forces and forms is said to be the Guru. O dear one, though without three eyes, Guru is Lord Shiva, the witness of all. Though without four arms, Guru is Lord Vishnu, the preserver. Though without four faces, Guru is Lord Brahma, the creator. This the scriptures declare. I make these salutations with folded palms to immerse myself in the ocean of mercy that is Guru, because it is by the Guru's grace that a being is liberated from this universe of ceaseless change and ever-turning wheel of birth and death. The supreme form of Guru is a nectar of immortality to one who has eyes of discrimination, but like the blind who cannot see the sunrise. Those who are idle, sluggish, or indifferent are unfortunate, for they cannot perceive this divine form. O dear one, every day with all devotion one should offer full prostrations in the direction where the holy feet of the Guru abide. O noble one, the wise and the learned always offer handfuls of sweetest, most fragrant flowers in the direction of the revered and blessed one, the Guru, who is free, fully awakened, and witness to the eternal drama of the creation and dissolution of the universe. Guru resides in the center of a sacred mandala surrounded by the Guru's spiritual lineage. Shiva, Lord of demigods and the dissolver of the universe, the three holy mountains where reside the essence of Divine Mother, the two principal qualities of Supreme Lord, the power of manifestation and the power of self-awareness, the goddess who destroy intolerance, limitation, selfishness, and ignorance, perfected saints and sages, the great heroes and heroines of renown, who are triumphant in battle over evil, who lend their protection in the performance of sacred ritual and who help to overcome fear, the sounds that have the power to create and the highest mantras. Salutations to all those luminaries who attend the Guru. What is the use of undeveloped seekers spending so much time practicing hundreds of rounds of long deep breaths in order to regulate the life force? These exercises can be uncomfortable and are difficult to master. Indeed, such unguided practice can disperse the life force, causing disorders. Instead, just serve your Guru constantly and you will attain mastery over the life force naturally and spontaneously. It will become regulated on its own accord. To contemplate the form of your Guru is to contemplate infinite Shiva. Truly, whenever you utter your Guru's name, it is the same as chanting the name of Lord Shiva. Even a few of the smallest specks of dust from Guru's feet form a bridge strong enough to cross the ocean of fleeting worldly existence. That supreme Guru we honor, serve, and worship. Upon receiving Guru's benevolent grace, one should turn away from the ways of born of ignorance and humbly open one's heart to the highest master to attain the most valued of wishes, self-realization. At the crown of the head, the gateway to Brahman, in the center of a bright lotus illumined by a circle of moonlight, are the lotus feet of the Guru, which destroy the raging fires of worldly existence. Reflect on the Guru as seated in the center of a 1,000-petal lotus at the heart of a sacred triangle. The mantras of Brahma, Vishnu, and Shiva ring out from its corners, that of the transcendent self on either side. Guru's glance creates all the worlds, makes everything flourish completely, and it perceives the essence of all holy scriptures. It perceives that wealth does not lead to liberation, and it purifies devotees of all deficiencies. Guru's vision beholds the self in the midst of ever-changing nature and illumines the path to liberation. Guru's glance is the pillar that supports the stage where all worlds are exhibited. It showers the nectar of compassion. It is the sum total of creation, evolution, and dissolution. The Guru's glance creates past, present,
and future, and bestows the vision of Sat Chit Anand, truth, knowledge, bliss absolute. May the Guru's divine grace always be on me. Oh dear Parvati, I consider the word Guru to be the king of all mantras. Pure as gold, refined in fire, it has been thoroughly confirmed by reason, meditation, prayer, and intellect. It protects one from death day and night. Guru moves, but is still, ever still. It is far away, yet near, both inside as well as outside of all things. Know that this is the consciousness the Guru experiences. I have no birth. I am ageless, without beginning or end. I am endless consciousness and bliss. I am smaller than the smallest, larger than the largest. I am the supreme, unseen, primal cause, eternal, self-luminous, without taint and craving. I exist beyond the limitations of space, immovable, blissful, imperishable. Gain the knowledge of Guru's divine nature through the revealed wisdom of scriptures, direct perception born of a clear, focused mind, the revered teachings passed on by tradition and by inference, and by always being mindful of Guru's guidance. O great soul Parvati, seeing that the holiness resides in you, I will speak to you now of the nature of Guru upon which one should always reflect. Salutations to the Guru who reveals the sacred universe in its fullness, permeated by all animate and inanimate objects. Salutations to the Guru, whose lotus feet are adorned with the most splendid jewels of wisdom from the highest scriptures, who is the sun whose light causes the lotus of knowledge to bloom into self-realization. By even a moment of loving remembrance of the Guru, wisdom arises spontaneously, without doubt. Loving recollection of the Guru fulfills all goals. Salutations to the Guru. Salutations to the Guru, who is pure, eternal consciousness and peace, who is without flaw, beyond limitations of space and time, who is the primordial sound and the source of creation. Truly, the Guru pervades all that changes and all that does not, all that is animate and all that is not. Salutations to that Guru. Salutations to the Guru, who, adorned with the garland of highest truth, rides the power of knowledge and brings enjoyment in this life as well as celebration. Salutations to the Guru, who incarnates the karma of countless lives through the power of self-realization. Salutations to the Guru. There's no truth greater than the Guru. There's no path of self-discipline greater than the service to the Guru. No knowledge higher than the knowledge of the Guru. Cherish these thoughts while offering salutations to the Guru. My Guru is the support and protector of the universe and the master of every plane of existence. Myself is the self of all beings. Mannath Shri Jagannath, Madguru Shri Jagatguru, Madatma Sarva Bhutatma, Tasmai Shri Gurave Namaha. The root of meditation is Guru's form, the root of worship, Guru's feet, the root of mantra, Guru's word, the root of freedom, Guru's grace. Dhyana Moolam Gurur Murti, Puja Moolam Gurur Padam, Mantra Moolam Gurur Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. Salute who has no beginning, vision of all, the supreme transcendent deity. There is nothing higher than the Guru. Merit gained through baths and other sacred activities in holy waters of the seven seas can easily be attained in 1,000th of a drop of water from Guru's feet. If you alienate Siva, who is the remover of faults and ignorance by your mistakes, Guru will save you. But if you are alienated from the Guru, no one can save you. Therefore, with all effort, take refuge in the Guru. There is nothing higher than the Guru. Indeed, Guru is the entire universe comprised of the qualities of Brahma, Vishnu, Shiva. Therefore, one should worship the Guru. There is nothing higher than the Guru. Through devotion to the Guru, one attains knowledge as well as the wisdom that liberates. Therefore, for those who tread the path of devotion, Guru is the perfect object of contemplation. Nothing exists which is higher than the Guru. Indeed, the scriptures claim that if the mind meticulously analyzes every particle of creation, it can never fathom the fullness of the Guru. Truly, one should always venerate the Guru with thought and speech. It is purely by the Guru's grace that Brahma, Vishnu, and Shiva gain the capacity to guide the creation, sustenance, and dissolution of the universe. Perfection comes by serving the Guru. Sages, gods, demigods, celestial musicians, spirits of ancestors of human races, sprites, and that attend the gods, spirit beings who exist to praise the gods, do not know the proper manner of serving the Guru. Like pots on a potter's wheel, even ascetics, renunciates, and those with profound knowledge and self-discipline continue to spin in the emptiness of the world of change. Departed spirits of ancestors, great heroes, seers, adepts who possess supernatural powers or who have achieved mastery over the senses and their objects, even gods, demigods, and celestial musicians who attend them,
be free from the cycle of birth, death, and rebirth if they turn their faces from serving the Guru. O God, Supreme Goddess, listen to the method of meditating on the Guru who bestows all joys, grants all pleasures, and all worldly fulfillment, as well as liberation. I remember the Guru who is Supreme Brahman. I speak of the Guru who is Supreme Brahman. I bow to the Guru who is Supreme Brahman. I serve the Guru who is Supreme Brahman. I bow to the truth-bearing Guru who is the bliss of Brahman, who bestows highest truth, joy, one who is one without second, the embodiment of wisdom beyond duality, who is infinite like the sky, who exemplifies the great Vedantic proclamations such as Thou art that, who is one, eternal, pure, unshakable, the witness of all minds, beyond all changes, and is free from the bounds of nature. I bow to the Guru who is Brahman, eternal, pure, who is beyond perception and form, without taint, who is infinite knowledge, consciousness, and bliss. Meditate on the divine form of the Guru, seated on a throne in the center of lotus of heart, here at the axis of the womb of countless universes. Guru, adorned with the jewel of transcendental consciousness, shines like the crescent moon, dipping the nectar of immortality, and fulfills all righteous requests. Visualize the Guru in white garments, anointed with pure fragrant ointment and adorned with flowers and pearls, with eyes that radiate joy. Guru's gentle smile is a treasure house overflowing with grace. To the left, Goddess Shakti abides, seated close by. Her garments gently touches the Guru. I always bow to the Guru who exudes bliss, who is pure and bright, whose nature is knowledge, and who is awake to this true self. Lord of yogis, adorable and worthy of worship. Guru is the physician who cures the disease of countless cycles of birth, death, and rebirth. I bow to the Guru in whom the eternal cosmic processes of creation, sustenance, dissolution, regulation, and grace are present. As you arise each morning, repeat Guru's mantra with your mind fixed on the crown of your head. There the Guru, the two-eyed, two-armed God of peace abides, seated on a white lotus, granting the boon of fearlessness. Abhay Mudra. There is nothing greater than Guru, nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru. This is the doctrine of Shiva, the teaching of Shiva, the declaration of Shiva. This is the solemn word of Shiva. Guru is Shiva. Without a doubt, Guru is Shiva. Guru truly is Shiva. Be assured, Guru is Shiva. By my authority, I proclaim this. This is my teaching. This is my doctrine. This is my creed. By meditating on the Guru in this manner, supreme knowledge bursts forth spontaneously. Therefore, one should cultivate this understanding. I am liberated by the grace of the Guru. One should purify the mind by following the path shown by the Guru. Do not cling to things that are transient, which you have imagined to be qualities of the self. The essential nature of objects, the knower of objects' mind are worthy of being known. One should reflect on the truth that objects of awareness and awareness are identical. There is no other way to liberation. O great goddess, those who scorn the Guru, even after hearing these teachings, go to a place of dreadful torment for as long as the sun and the moon exist. Keep the Guru's mantra, teachings, and spiritual presence in mind through the duration of every birth. Indeed, until creation's end, one should never forget the Guru, even if one attains self-realization. Wise disciples should never utter what is not completely true or speak discourteously or with disrespect in front of the Guru. Those who speak to the Guru with egotism or anger or engage in arguments with the Guru will lose what wisdom they have gained. They will be reborn in waterless land with no interest in the highest truth, or as spirits who oppose the truth or who are adversaries of humanity. O Parvati, Guru protects one from malicious interference, from envious ascetics, heretics, and even gods. Guru also safeguards one from fear at the time of death. Even gods, ascetics, and other beings that have the power to curse are powerless in the presence of the Guru. There's no doubt that this malicious interference ends, and they soon perish by the intervention of the Guru. O Goddess, the two-syllable word Guru is the king of all mantras. It is the essence of the highest scriptures and secret wisdom and leads to the highest state. Indeed, those who are devoted servants of Guru can be regarded as true renunciates. Even they are ignorant of the scriptures. Even if they are ignorant of the scriptures, all others are merely wearing renunciates robes. Just as one lamp lights another, Guru awakens knowledge of this eternal, imperceptible Brahman who appears as everything in creation, but is itself without form or attributes. Jyoti Swarupa. Perceive the joyous self through the of the Guru's grace. Knowledge of the self rises through this power. I bow to the Guru, who is the creative power of the universe, who permeates the entire universe. All that moves and that is unmoving, from a blade of grass to the highest self. I always bow to the Guru's existence, knowledge, and bliss, who is beyond all multiplicity, eternal, complete, without form, without attributes, and who abides in the self. Meditate on the Guru, who is beyond all beyonds, and the of bliss as resides in the center of your heart, pure and bright as crystal. Have no doubt
that as the image of a crystal is reflected in a mirror, so also reflected in a tranquil, clear, and one-pointed mind is the bliss of the self. Experience this as that supreme bliss I am. Listen as I describe the state that rises when meditating on the self. Reflect on it at all pervading knowledge and light, the size of a thumb residing in the heart. Atma, Rama, the radiance in me. I am beyond any efforts at conceptualization. I am not attainable by the mind. I am without name, form, and sound. O Parvati, know this as Brahman, one's true nature. As the fragrance of flowers and camphor is natural to them, as cold and heat are natural phenomena, so is eternity natural to Brahman. Having become one with Brahman, one may abide anywhere firm in that realization, just as larvae unfold their true nature as bees by incessantly meditating on the nature of a bee. One who meditates on the Guru as Brahman becomes Brahman. Meditating on the Guru is in this manner, the disciple becomes one with Brahman and is liberated from Pinda, Pada, and Rupa, the force of creation, the movement of life force and matter. There is no doubt about this. Parvati then asked, O great Lord, please further define for me Pinda, Pada, and Rupa. And what is beyond Rupa? Please explain this to me, O great Lord, source of bliss. Shiva said, Pinda is the latent power of evolution within Pada is the breath and the life force, and Rupa is the subtle cause of all physical forms. Beyond Rupa is Brahman, the pure. O beautiful one experiences liberation when divine creative power within is fully awakened, when the life force becomes utterly still, and when one can hear within the mantra of transcendent self, hum, sa, repeating by itself. One no longer identifies with the physical form and is liberated. But those who go beyond even all these are truly free. Having become one with all there is, one can perceive the highest truth. There is nothing greater than the highest. All that exists has no other abode. On having caught sight of the highest truth by the Guru's grace, one should resolutely continue maintain a tranquil, balanced mind and completely let go of all cravings and attachments. Whatever you acquire or do not acquire, whether it is great or small, enjoy it with the mind that is contented and without cravings. The awakened ones say that having attained the all-knowing state, the embodied soul becomes one with everything, ever blissful and tranquil. Such a one rejoices everywhere. Moreover, wherever the knower of Brahman lives, that place becomes a vessel for all that is auspicious, good, and holy. O Goddess, thus I have described to you the characteristics of a liberated being. I have also explained to you the proper course for knowing the true nature of Guru, and I have fully explained how devotion to and meditation on the Guru bestows liberation. O great self, I shall now speak of what can be accomplished by listening to Guru Geeta. This song is not meant for obtaining fleeting worldly gains, but to bring the highest benefit to all beings in all the worlds. Those who strive for worldly gain and who lack insight sink into the ocean of worldly limitations and transitory existence. But knowers of the highest truth are not bound by their actions, whatever they may be. If one reads or hears this Guru Geeta with an attitude of devotion, or even if one shares it to another, it produces all fruits. So you can organize similar sessions, share experiences, inspire others to join the upcoming sessions. Oh Goddess, I have revealed to you the song of the Guru, the essence of pure truth. Without a doubt, regular listening of this song destroys the disease of transitory existence. Repeat the Guru Geeta, in which every letter, every sound, every syllable is imperishable, radiant, and powerful. It is the highest of all mantras. All other mantras are not worth even 1/16th part of one letter of Guru Geeta. Infinite and endless are the rewards obtained by repeatedly listening to Guru Geeta. Bondage from all past wrongdoings is destroyed and all hardships come to an end. There is no doubt about this. It removes the fear of time and death and all misfortune. It erases the fear of ghosts, demons, evil spirits, and wild beasts. Mahamrityunjay mantra, which was given by Rishi Markandeya 16 at the age of 16 years, and his age got extended to 1,000 years. The benefits of that are all included in Guru Geeta. It destroys powerful resistant diseases, bestows all prosperity, and makes perfection possible. More importantly, it subdues ignorance. Listen to it always. Listening it while seated on cloth brings lack on stone, disease on earth, unhappiness, and on wood it becomes useless. Listening it while seated on a black deer skin, one attains knowledge, while on a tiger skin, the treasure of liberation. Sitting on a sacred kushagrash brings wisdom, and a seat of wool brings all it invents. O Goddess, repeat this song with one pointed mind on an auspicious seat covered with pure, spotless wool blanket.
Oh beloved, one should use a white seed for attaining peace, a red one for self-control, a black one to eliminate malevolent spirits, and the yellow one to attract wealth. Listen the Guru Gita facing north to attain peace, east for self-control, south to destroy all adversities, west to attain prosperity. All the benefits of all directions, the Vastu Shastra, are also included. Guru Gita has the power to enthrall all creatures and to liberate them from bondage. For one becomes the beloved of gods and rulers, all planes of existence become one's dominion. It has the power to subdue harmful attributes while increasing the beneficial ones, destroy the fruits of pain-bearing deeds while bringing forth the fruits of deeds that are painless. Panchaksharam Mahamantram Om Namah Shivaya, as Gurudev says. The benefits of that are also included. It brings to perfection all righteous acts. It removes the fear of the influences of planets, destroys bad dreams, and makes good dreams come true. So Navgraha Puja benefits are also there. It bestows the highest peace under all circumstances, grants righteous children to the barren, averts widowhood, and brings good fortune. There are many stories of many out of living couples nurturing participants as their own kids, though they don't have kids, but still they nurture participants as their own kids. It gives long life, good health, wealth, children and grandchildren. The widow who repeats the Guru Gita without selfish desires gains liberation. So Ashta Lakshmi Puja. Even if she repeats it while harboring desire, she attains non-widowhood in the next birth. All fear, suffering, and obstacles will be destroyed. All malicious interference will be removed. It brings tranquility where obstacles and torment once prevailed. It grants prosperity and fulfillment of virtuous desires, righteousness, and liberation. Without a doubt, one directly obtains all that one could desire. Fulfillment, Puranta. Guru Gita is a wish-fulfilling cow for those who desire objects, a wish-fulfilling tree for those who cherish all that can be imagined, and the wish-fulfilling gem for those disturbed by anxious thoughts. Guru Gita creates auspiciousness in every way and for everyone. For those whose goal is liberation, who repeat it daily, the radiance of liberation will be attained. Those who repeat it desiring enjoyments will no doubt also attain the fruits of their desires. Guru Gita is repeated by the devotees of Divine Mother, the Sun God, Lord Ganesha, Lord Vishnu, and Lord Shiva. O Goddess, it brings all attainments without a doubt. This is the truth. What I say is true. O beautiful one, now I shall describe the places to repeat it to achieve that which is longed for at the sea, a river bank, or in temple of Lord Vishnu or Lord Shiva, or in a temple devoted to the Divine Mother, any place made holy by worship of divine, in an ashram where cows reside, under the holy banyan or gooseberry trees, in a garden of holy basil plants, or in any pure, clean place. Listen to Guru Gita regularly with your mind focused and at peace. By reciting this Guru Gita in cremation ground or other places that inspire fear in most people, or near the root of a banyan or thorn apple tree, or close to a mango tree, one gains success. As children are cherished by their parents, so too are disciples loved and cared for by the Guru. Even those who are ignorant or dull reach perfection in all righteousness, actions, initiations, vows, and challenging disciplines. Others cannot. In Narad Bhakti Sutras, my promise poem by Sri Sri and reference of such disciples in Guru Puja course is also made. Those who have attended would know. The wise who understand the nature of life always bathe in the waters of the Guru Gita to wash away the impurities of this fleeting world of sense objects and desires, and to become free from endless cycles of rebirth. One whose knowledge of absolute truth is constant and complete is truly the Guru. There is no doubt that wherever the Guru dwells becomes the holy place. Guru remains pure, holy, and immersed in self-realization in every place. Without a doubt, wherever the Guru stays, multitude of gods also dwell. Listen to Guru Gita while seated in a meditation posture, while lying down, walking, standing, speaking, riding a horse or elephant, whether attentive and with devotion or distracted and without feeling. One who always listens to Guru Gita is pure of mind and wise. By merely seeing such a one, rebirth is overcome. Just as the water of a river merges with the water of ocean, as milk perfectly merges with milk, clarified butter with clarified butter, the space within the pot with the space outside it, so too the individual self merges with the Supreme Self. In this manner, the individual self of the wise one merges with the Supreme Self day and night, and in every location, the wise one delights in oneness. Jivan Mukta. Thus, the awakened one always dwells in supreme freedom, existing as the embodiment of devotion and serving all. O Parvati, all doubts are left behind. Such a one, truly free, experiences both liberation and delight in this world. The goddess of speech and learning resides on the tip of the tongue of the realized soul, Saraswati. There is no doubt that
Anyone who repeats or listens to Guru Gita will attain all spiritual accomplishments as well as worldly pleasures and liberation. All I have said is the truth. The knowledge I have revealed is real and worthy of being followed. Oh, beautiful one, all I have said is true. There is nothing like the Guru Gita, nothing like the Guru Gita. In all sacred traditions, God, the absolute reality is one, and to be steadfast in living a righteous life is one. To faithfully live by these fruits is the highest self-discipline. But there is nothing higher than the Guru, no reality, no teaching higher than the Guru. Fortunate is the mother of the one who has devotion to the Guru. Fortunate is the father, fortunate is the family and the ancestors. Blessed too is the earth where the Guru dwells. O Goddess, such devotion is truly rare. The body, the senses, vital, life force, wealth, close and distant relatives, mother, father, family, O Goddess, have no doubt, Guru is all these. O Goddess, mantra, repetition, vows, and rigorous disciplines practiced through millions of births since the beginning of creation only bear fruit when the moment Guru is satisfied. Those who do not serve the Guru are unfortunate, even the knowledge and powers gained through rigorous disciplines. O beautiful one, this is the truth. Brahma, Vishnu, Shiva, divine seers, ancestors and celestial musicians, singers of praise and protectors of wealth, even realized beings and great sages, none can succeed without the grace attained by serving the Guru. Those who constantly abide in the devotion to the Guru have reached the highest place of pilgrimage. Without such devotion, traveling to big sacred sites serves no purpose. O Goddess, all places of pilgrimage reside in the big toe of the Guru's foot. Abandon all unprincipled places and all actions that do not bring spiritual growth and recite Guru Gita. One means endless rewards and spiritual victory. It is not conducive to success to repeat this hymn in an environment that is inappropriate. One attains inferior fruits, whereas listening to Guru Gita when undertaking a journey or when facing danger from an enemy in battle, one attains success. At death, it brings liberation. For the devoted disciple, every endeavor at every location is completed. This doctrine, mysterious, subtle, and hidden, that I have revealed to you should not be disclosed casually to just anyone. Protected with every effort, I have revealed it to you because you are dear to me. Our own divine sons, the gods, Lord Vishnu and others, they keep this in their minds, but do not speak it aloud. What I have taught you is true. This teaching is true. This doctrine should only be revealed to the one whose mind is matured and fully ready to hear the truth. Oh, beloved, my very self, impart this doctrine only to the one who is endowed with faith and devotion. Never even think to impart the Guru Gita to one without devotion, a cheat, a rogue, a hypocrite, or one who lacks belief. Guru Gita can rescue seekers from the constant flux of worldly illusion. This mantra is without fault and is worshipped by Brahma and other gods. It eradicates adversity, pain, and the disease of endless birth. I bow to the highest mantra, the Guru Gita, which erases the greatest fear. Thus ends the Guru Gita, which occurs as a dialogue between Lord Shiva and the goddess Parvati in the later portion of Skanda Puran. It is offered to the holy feet of the revered giver of light, our Gurudev. Jai Gurudev. Swason ki mala simran tera naam. Swasan di mala simran tera naam. बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान. श्वासा दी माला नन सिमरा में तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम. वाहे गुरु 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 गुरु वाहे गुरु वाहे. वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने रे. पर दुखे
उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गुरु जैसा नहीं कोई देवा, जिस मस्तक भाग सुलाग सेवा। गुरु महिमा परम्पारा, बिन गुरु जीना सुखी धारा, गुरु चरणों की धूलि अनूठी, जागी सोई किस्मत रूठी, गुरु प्रेम अथा सागर, खाली मटकी भर दे गागर, कित जावत क्या अंदेशा, गुरु मोन में दे संदेशा, बिन कृपा क्या नी पाऊं, गुरु ध्याए सो यूं तर जाऊं, तेरा गुणगान तेरी भक्ति, गुरुदेव से ही सब शक्ति, और लिखूं क्या नी कह ना पाती, गुरु ज्योत मैं जलूं बिन बाती, गुरु ज्योत मैं जलूं बन बाती, गुरु ज्योत मैं जलूं बन बाती। जो ध्यावे फल पावे, दिख दुख बिन से मन का, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, तेरा तुझको हर पल क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, बोलो जय गुरुदेव हरे। बहती ज्ञान की धारा, बहती ज्ञान की धारा, मिलकर साथ बहो, ओम जय गुरुदेव कहो, ओम जय गुरुदेव कहो। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मदेव स्वरूपम्, अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सो बात वापस एक बार यहाँ पे स्वागत है। तो स्वस्थ क्या होना, स्वस्थ का क्या मतलब है? स्वास्थ्य, स्वयं में स्थित होना। ये
दिस इज द बिगेस्ट तपा, मन को अपने स्वयं में बैठा पाना। तो ये सब जो भी टेक्निक्स हैं ये उसी के लिए है। पर क्या महामंत्र क्या है? गुरु। जैसे जो गुरु जी ने हमको शुरू में ही दे दिया, क्या? जय गुरुदेव, उसमें भीतर छुपा के हमको दे ही दिया। इसीलिए बोलते हैं कुछ भी अटके क्या बोलो, जय गुरुदेव, तो अपने आप कार्य हो जाता है। और फिर क्या सीखा हमने? इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर ऑफ गुरुज फीट, लेफ्ट ओवर फूड, बिग टो, ये सब सीखा। और जब मैं पिछले की अपने 15-20 साल की का जीवन देखता हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ गुरुदेव के प्रेजेंस में, ये सब चीजें अपने आप से ही होती थी। और what had no hope to happen also happened seamlessly. So before we reach the final abode, let us all take refuge in Guru's lap. सही परम धाम वही है। तो गुरु जी ने हमको कितने कार्यक्रम दिए हैं, है ना? 57 different programs he has given. सब एकदम comprehensive, concise, correct, complete, consolidated programs he has given to us. तो सब कुछ यहाँ पे है, तो फिर कहीं और जाने की क्या जरूरत है ना? So it's like a departmental store, Gurudev says. So Upnanam में क्या? Gurudev whispers infinity into devotees' ears. Guru Puja में क्या? Prepares the devotee to invoke infinity in other people. VTP TTP में क्या होता है? Makes us balshali, है ना? Normal devotee to Hanuman. और फिर IXL series of program, corporate programs, excellence के programs, you know, they are like amazing things. Then so many seva projects Gurudev has given us. तो सेवा क्या है? टू बी अनेबल टू डू व्हाट यू डू। तो अभी तक आपने जो नहीं किया वो करने का निश्चय आज हो चुका होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी कुछ देर के लिए हम सुनना चाहेंगे आप लोगों से, जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लगा थोड़ा बताइए। अभिषेक, मे बी यू कैन स्टार्ट एंड देन वी कैन गेट सम फ्यू मोर। This was we all were waiting for. And एक एक शब्द जो आपने कहे, it is like ये हम सुनने को तरस गए थे भैया। ये 2 साल से चल रहा है सत्वा टॉक्स, लेकिन हर सेशन में कुछ तो एक जो नहीं होता है, एक डिवोटी सुनना चाहता है, जो कहीं ना कहीं ग्लिम्स में आता था। आपने सुनामी लेके आ गए हो भैया। Yes, this was a long thirst we are having. वो प्यास थी, बहुत दिन की थी। ये सब आपके 2 साल के तपस्या का फल मान लो, वही है। यस, मैं बाकी लोगों के भी एक्सपीरियंसेस सुनना चाहूँगा। बाकी लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव भैया, आवाज आ रही? यस यस यस, आ रही है। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हाँ, वीडियो ऑन है। इसको जो कुछ हुआ अभी, तो उसको शब्दों में कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। ये जो कुछ अनुभव है, शब्दों से on speaking on spotlight so that I can see. यस, एक सेकंड। हाँ, प्लीज जो कुछ अनुभव किया है उसे शब्दों में बयां करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कह सकते हैं ना, बड़े गागर में सागर वैसा, और मतलब बिल्कुल अलौकिक है। और जैसा भैया कह रहे थे, अपने आप जैसे पहुंचा है वैसी स्थिति हुई है। तो मैं दोनों भैया का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप तो हमारे ऑफिस में है ना, बीवीके में? हाँ जी, मैं इसमें किचन में सेवा में। किचन से वहाँ आपको तो दिखते हैं। हाँ, मुलाकात होती रहती है आपसे। पद्मनाभ में ही रहता हूँ मैं तो। आपके हाथों से ही प्रसाद खाते हैं किचन। गुरुदेव। बड़ा मजा आ गया। आज आपका एक और नया रूप देखने को मिला। नहीं, आपकी जो आज भौतिक अभिव्यक्ति भी और दिनों की बजाय बिल्कुल अलग है।
अब देखो ये सब इसमें फंसना नहीं है. Paswini ji, I think he wants to share. Yes, please unmute. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टच किया और गुरु के बारे में इतना गहरा अनुभव भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू भैया. जय गुरुदेव. बाकी किसी और को कुछ शेयर करना है, प्लीज अनम्यूट एंड शेयर. यस, जय गुरुदेव. आज का टॉपिक जो है गुरु थ्री जी से रियली ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है. वो समझने को ही हमको बहुत ये लगा कि बहुत ध्यान से सुनना पड़ा. वी कैन नॉट ऐसा मुंह और आइज ऐसा इधर से उधर ऐसा नहीं कर पाए बिकॉज इट वाज कंटिन्यूअस, यू नो, नॉन स्टॉप. थोड़ा टाइम लगा हमको समझने में. हमको जितना समझा उतना ही हमारे लिए बहुत ये लग रहा है. इट्स रियली अमेजिंग. वो तो उसको तो हम लोगों को वापस रिकलेक्ट करना पड़ेगा पुनः. गुरु ग्रेस ऐसा रियली गुड 3Gs जो है. अमेजिंग सेशन है. थैंक यू वेरी मच. जय गुरुदेव. Jai Gurudev. I often say, this is like bombarding the intellect with so much knowledge that it has no choice but to doze off. वो एक कमांडो और एक 303 वाला जो है ना, उसके बीच में कंपटीशन है. So, with this, what is really happening is कि इतना कुछ इतने छोटे समय में हम इंटेलेक्ट को मिलता है कि उससे परे जाना ही पड़ता है. कोई चॉइस नहीं है. और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पकड़ में नहीं आया, बट तसल्ली रखिए, सब कुछ अंदर है. वो सिर्फ उसको जागृत किया है. वो स्पंदन जब आपको चाहिए वो मिलेगा ही. ये तो इस चीज की गारंटी है. थैंक यू. Who else? Feeling blessed, really blessed to hear Guru Geeta on the week of Guru Purnima. Really, thank you so much. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Yes, we were trying to do it on the Guru Purnima day, but then I am traveling and I'll be in Kota for Shravan Rudra Pujas and Guru Purnima program. We'll be doing it from there. So Abhishek thought we will do it. और आज भी अच्छा दिन है, देवी का दिन है. Who else wants to go? जय गुरुदेव. Yes. अपरिजाता जी है. हाँ. अपराजिता. अच्छा. मतलब जो जिस पे कोई जीत नहीं सकता. ऐसा ही यही है ना. जिसको कोई जीत नहीं सकता. Yes, that's the meaning of my name. I'm so thankful. I'm feeling so blessed. I just had a wish to hear Guru Geeta. What is Guru Geeta? I was just hearing, but I never knew. But today was such a blissful experience. I was just immersed. Thank you so much. Heartfelt gratitude. Actually, I have no words to express myself. I'm feeling so blessed. I have no words to express. Thank you so much. Thank you. Sangeeta ji wants to share something. Yes. She's still in the meditative state, she says. जी. संगीता जी. गुरु कृपा महसूस कर रही हूँ गुरु गीता सुनकर. बहुत ही अच्छा लगा. कहीं ना कहीं ये इस चीज का अंदर भीतर इसको सुनने की लालसा है ही. जो कुछ कहीं कुछ ऐसा गैप्स लगते हैं, कुछ इनकम्प्लीट लगता है, this completes it all. It puts everything in the right perspective. That's personally has been experience for me. Who else wants to say? सुनने से या जी बोलिए. कौन बोल रहे हैं? जय गुरुदेव. It is Sangeeta here. Oh, Sangeeta. Yes. Just if you can on your video, it will be so nice. Because please, Sangeeta Didi. Yeah, actually lights are off. इतने meditative में थे. No problem. Okay. No problem. Please share. और
मतलब सुनने से इतना, मतलब इतना डीप चले जाएंगे, मतलब दिस इज जस्ट अमेजिंग. मतलब इट्स जस्ट, I don't know, I went very deep, like it was just beautiful. I don't, मतलब, बात करने का मन नहीं होता है. It says no, because you know even 1/16 of a syllable of Guru Gita has more power than put together everything else. So ये तो होना ही था. Good. still, मतलब this there in the chest, you know, like it will stay. I don't know. It will stay for a long time. And Okay. Yeah. So you can all organize these sessions, you know, at your place. Virtually कर सकते हैं, or you can travel also and do it. Like we are holding one in Whitefield on coming Sunday. वहाँ पे हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है. तो जब हमने शुरू किया था तो शुरू में ऑफलाइन ही हुए थे, फिर कोविड हो गया, फिर ऑनलाइन शुरू किए. So please spread the word around, share with other people, bring more people, organize, you know, and reach out to us or Abhishek. We can do it, you know, plan more such sessions, because ये चीज सबको मिलनी चाहिए, right? ऐसा something which everybody should know. In fact, one of the sessions, there was one devotee who came, just finished Guru Puja phase 1, and they said कि वो भानु दीदी ने बोला कि अच्छा ये गुरु गीता सुननी चाहिए सबको. तो मैं तड़प रही थी कहाँ मिलूं, मेरे को कुछ मिला नहीं. तो after 3-4 days this session happened and she felt so grateful. तो गुरु भानु दीदी का जो गुरु गीता का चैंटिंग सेशन है, जो चैंट्स है, वो भी सुनना चाहिए, मौका मिले तो we should listen to that also. This was more a sense and more English version of it, but those chants are also very powerful. Very powerful. Who else wants to say? Kanan Swami ji, आपका कुछ? It's a very nice session, sir. Very nice session. Thank you very much, sir. जी. Wonderful. ना इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त. एंड ये अच्छा नहीं है, ये एक जो रियलिटी थी भैया आपने बहुत ही सिंपल वे में बता दिया. एंड दिस वाज लाइक द अल्टीमेट. जो हम सब डिवोटीज को, हमें बहुत मुश्किल से गुरु मिले हैं, मुश्किल से मिले या आसानी से मिले, ये तो गुरु को ही पता है, उन्हीं को वही जानते हैं. बट एक रियल पिक्चर दिख जाना, वो एक इसका अनुभव भी हो जाना, ये बहुत बड़ा एक सेशन था जिसमें हमने थोड़ा सा जो था वो रियलाइज किया उस बड़े वास्टनेस को. एंड जिस फ्लॉलेस तरीके से आपने सारी चीजें बताए और जिस इंटेंसिटी के साथ बताए, वो सारे इंटेंसिटी हम रेजोनेट कर रहे थे. एंड the way you are speaking now, and when the way you are speaking Guru Gita, that I means I'm ये जिंदगी भर के लिए मैं gratitude feel करूंगा for this session. And thank you so much. And so this is said like, you know, this is वो होता है ना divine defibrillator, है ना? वो क्या होता है, जो last phase में कोई डॉक्टर है तो जानते हैं, when the person is almost gone, उनको रिवाइव करने के लिए क्या defibrillator बोलते हैं ना, ICU में लगाते हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं. This is, I call this as the divine defibrillator. गुरु अस्त्र. ये गुरु अस्त्र की तरह है. ये एक बार चल गया तो फिर it's very potent, transformational. It almost adds rocket engine to our little wings. And anyways, who is in real control? You know, we are all pawns moved by an invisible hand. तो गुरु के big toe में उनके water from his feet, leftover food glance, उसमें ये सब चीजें सोचने वाली हैं. और शरण में जाने से परम धाम, मुक्ति में मुख में सरस्वती का वास, वो पेट में सबके दुख तकलीफ और बातों को हजमाने की क्षमता, हाथ में पावर टू गिव विंग्स टू द डिवोटीज, उनके सत्कर्मों को बनाना और जितने असत कर्म है उनको जलाना.
ये गुरु का काम, इसीलिए गुरु अस्त्र। तो जो आज मिल गया है ये अतुलनीय है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कितना भी कहते रहो कोई अंत नहीं है। True. So let's close our eyes once again, fold our hands. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्मस्ते मयि संतु ते मयि संतु। Let it get established in us, present as a seed, get rooted, sprout and blossom. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you. Jai